भाई खाना वाना खा लिया? की हाल है? खाना वाना खा लिया? ये आवाज नहीं आ रही है बच्चा पार्टी। भाई खाना वाना खा लिया है? यस यस यस, कम ऑन। ओके, आई थिंक। हाय, हाउ आर यू? फाइन। चलो देख लेते हैं कौन कौन ज्वाइन हो गए। यस, ओके। भाई देखते हैं कौन कौन ज्वाइन हो गया है। कम ऑन, वी विल वेट फॉर जस्ट 2 मिनट। हेलो एवरीवन। यस, भाई आवाज आ रही है? ठीक से आवाज आ रही है? यस बच्चा पार्टी, ठीक से आवाज आ रही है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आज 1 घंटा हो या 2 घंटे हो, हमें काम करना है। हम आज काम कंप्लीट करके रहेंगे। ओके, वी हैव टू कंप्लीट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव टू कंप्लीट प्रोटीन डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। आर यू रेडी? यस और नो? यस, आर यू रेडी? भाई 11 o'clock हो जाए या 12 o'clock हो जाए, हाँ प्लीज कम ऑन, बी प्रिपेयर्ड। चाय भाई पी लेना। रेडी? श्योर? लॉक किया जाए? ओके, देन लेट्स गो फॉर इट। नाउ हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई एक बार में डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन आपको क्लियर करना है। उसके साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर and we are also going to solve some NEET based MCQ. Are you ready for that? Okay. New 11th English medium, new batch. Are you ready? चलो 5 मिनट हमने ले लिए सबको फ्रेश होने के लिए। अब हम सुपर डुपर यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले बैकग्राउंड चेंज कर ले। यस यस यस, दैट्स ग्रेट। नाउ ओके, then let's go for it. Good evening to all of you. Now first of all, we will learn protein digestion. So first, protein digestion is really very tough. As per your NCERT, just 3 to 4 लाइन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बट हमारा गोल है प्रॉपरली उसके कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो यहाँ पे कुछ बेसिक थिंग हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि कोई फूड जिसमें प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो डाइजेस्ट होगा वो किस में डाइजेस्ट होगा? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल it is digested in stomach. Protein digestion will occur in stomach, and this protein will convert it into proteases plus peptone. How? So simple. हम यहाँ पे सभी बच्चों के लिए बेनिफिट हो वैसे प्रोट्यूजिस प्लस पेप्टोन। नाउ आपको रट्टा नहीं लगाना है, प्रोट्यूसिस प्लस पेप्टोन लगाने वाले कुछ बच्चे यहाँ पे रट्टा लगा देते हैं। भाई बीच में कॉल आएंगे तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। चलो बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक कर देते तो बेटर रहेगा। सो प्रोटीन विल कन्वर्ट इट इनटू प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन। नाउ व्हाट इज प्रोटीन? लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एमाइनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकंड, थर्ड, फोर एंड फाइव. Five polypeptide chain is called a protein. For example, this protein will break down into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 chain plus peptone is 2 chain. So it is called a protein breakdown. Protein digestion. It will start in stomach. How protein digestion will start and how protein will convert it into proteases and peptone. So you know, in previous year you study about HCl. You also learnt about pepsinogen, that what is HCl and what is pepsinogen. तो ये आपको जानना समझना जरूरी है. जो स्टमक है उसके अंदर जो म्यूकोसा लेयर है, ये स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा लेयर है उसमें से यहाँ पे ये तीन टाइप के सेल यहाँ प्रेजेंट है. फर्स्ट सेल, द फंक्शन ऑफ ऑक्जेंटिक सेल, फंक्शन ऑफ ऑक्जेंटिक सेल is to secrete HCl. Second function of this cell, that means chief cell for peptic cell. Chief cell, that means peptic cell. Now, this peptic cell will secrete pepsinogen. So now you can understand that in a presence of HCl, pepsinogen will convert into pepsin, and this pepsin will break down protein into proteases and peptones. Is it clear, Bacha Party? Can we say that it is complete digestion? No, it is initiation of digestion. Protein digestion will initiate in stomach. Now we will study that where next digestion will occur. So you already know that next digestion will occur in duodenum, in small intestine and in duodenum. You know that it is stomach, it is U-shaped duodenum, it is pancreas, and within a short time we will study about pancreatic enzyme. So this pancreas is going to release such an enzyme which will digest proteases and peptone, again in micromolecule. But now protein converted into proteases and peptone. Now this proteases plus peptone will converted into polypeptide in duodenum. Polypeptide in duodenum. Now the question is how this proteases plus peptone converted into polypeptide, and answer is from pancreatic juice. Here, like pepsinogen, you will find trypsinogen. This trypsinogen will get converted into trypsin. Now again, how this trypsinogen will convert it into trypsin? Answer is in a presence of enterokinase. Now, what is enterokinase? Just listen one thing, that enterokinase, as per your NCERT book, is secreted from mucus layer. Enterokinase is secreting from mucus layer, but enterokinase is made up by submucosa layers, Brunner gland. So Brunner gland is synthesizing enterokinase, is helper of enzyme, and you know that it is P for pancreatic juice. P for pancreatic. It is S for stomach juice. If any enzyme which is present in intestine, then we will say that it is intestinal juice. But this enzyme which is inactive, we have to activate it into trypsin in a presence of enterokinase.
Again, the question that can we say it is complete digestion? No. दिल्ली अभी दूर है बच्चा पार्टी. तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? प्रोटियोसिस पेप्टोन. अब ध्यान से फोकस करो. हमारा गोल है कि भाई एक अमाइनो एसिड सेकंड थर्ड फोर फाइव ऐसे 10 अमाइनो एसिड थे. 10 पोलीपेप्टाइड जो है चेन 5 थी. 10 अमाइनो एसिड से बनी 5 पोलीपेप्टाइड चेन थी. So total, as per example, for example, total number of amino acid in protein is 50. At the end, we will make single single amino acid, and when we will separate single amino acid, at that time we will say that it is called a complete digestion. But now, proteosis pattern again converted into polypeptide. Now, this polypeptide, that means यहाँ पे कितनी चेन थी प्रोट्यूसिस की 1 2 3 पेप्टोन में 1 2 तो ये 3 चेन जो यहाँ एक दूसरे से लिंक थी यहाँ पे पेप्टोन में 2 चेन वो 3 और यहाँ पे 2 वो हर एक पोलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे सेपरेट होगी 1 + 1 + 1 + 1 सो 5 पोलीपेप्टाइड अब यहाँ से एक पोलीपेप्टाइड जो है which is made up of 10 amino acid will break down into small amino acid. यहाँ पे पैनक्रियाट को थोड़ा मैं रफ करूंगा सो क्या है कि आपको थोड़ा इजी रहे. ये पैनक्रियास okay. Now polypeptide will convert it into small polypeptide. For example, this polypeptide यहाँ पे convert हुआ small polypeptide. Now, this polypeptide is made up of 10 amino acids. Small polypeptide will break down into 6 plus 4 amino acids. So, it is called a small polypeptide. Now, in a presence of which enzyme? So, again, this pancreas will secrete same enzyme. Just we have to write down chymotrypsinogen. ऊपर क्या था ट्रिप्सिनोजन नाउ इट इज chymotrypsinogen. This chymotrypsin again converted into chymotrypsin. So you can say that in a presence of chymotrypsin, this polypeptide will break down into small polypeptide. Again, one question in your mind that sir, trypsinogen is activated by enterokinase. Trypsinogen is activated by enterokinase, but chymotrypsinogen will activated by which enzyme? Answer is trypsin. You can see that this trypsin is useful to convert proteosis peptone to polypeptide. This trypsin is useful to convert chymotrypsinogen into chymotrypsin. Is it clear, Bacha Party? Now, can we say that it is complete digestion? No. This small polypeptide, this small polypeptide, याद रखो, small polypeptide will convert it into dipeptide. Dipeptide, that means two amino acids are linked by peptide bond. It is called a dipeptide. So small polypeptide, we just learned that it is made up of 6 and 4 amino acids. They will again break down into dipeptide. So again question is how this small polypeptide will break down into dipeptide. The answer is this last and final enzyme from pancreas. Pancreas will secrete procarboxypeptidase. It is tough name. Procarboxypeptidase. Again,
procarboxypeptidase converted into pro निकाल दो carboxypeptidase. Again question that how this procarboxypeptidase will convert it into carboxypeptidase. Again, answer is trypsin. Yeah, answer is trypsin. This way, you can say that someone may ask you that what is NOS function of trypsin? What is not function of trypsin? अगर क्वेश्चन पूछे तो उसके फंक्शन कौन से है वो याद कर लो. पहला फंक्शन in a presence of trypsin, this proteases plus peptone converted into polypeptide. Second function, chymotrypsinogen convert into chymotrypsin. Third function, procarboxypeptidase converted into carboxypeptidase. Now, these are the three functions of trypsin. Now, you can understand that what can we say that it is complete digestion? No, our last step is remaining. Our last step that do you know? This is dipeptide. You know that this is dipeptide. Now, this dipeptide again, this dipeptide again digested into amino acid बच्चा पार्टी. Is it clear? So यहाँ पे एक एंटिक चीज होने वाली है, देखना ध्यान से, एकदम सुपर डुपर हिट चीज यहाँ पे आपको समझाने वाला हूं. यहाँ ध्यान से देखो. तो दिस पेप्सिनोजन is activated into pepsin. Trypsinogen activated into trypsin. Chymotrypsinogen activated into chymotrypsin. Procarboxy activated into carboxy. But dipeptide will convert it into amino acid in a presence of already active enzyme peptidase. Another name of peptidase is erepsin. इरेप्सिन याद करो. अनदर नेम, थर्ड नेम जो डाइपेप्टाइड को ब्रेक डाउन करेगा, सो अनदर नेम इज डाइपेप्टिडेज. डाइपेप्टिडेज. दो थ्री दिस enzyme is already active. We have to activate pepsinogen, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, but in this last step out of 5 steps, this is already active form of enzyme. So dipeptidase या peptidase or erepsin will digest it into dipeptide to amino acid. Dipeptide to amino acid. Is it clear, Vacha Party? Okay. From where this chymotrypsin is secreted? You know, from pancreas. And procarboxy is also from pancreas. So trypsinogen, then chymotrypsinogen, then procarboxypeptidase. These three inactive enzymes are secreted from pancreas. But from where this activated enzyme is secreted? So please remember one thing, that just before some time I told you that in duodenum, innermost layer is mucosa layer. In mucosa layer, some cell called a Paneth cell. याद रखो कौन सा cell? Paneth cell. This Paneth cell will secrete dipeptidase. Is it clear? So enterokinase secreted from mucosa layer, synthesized in Brunner gland, which is present in submucosa. But in mucosa, these Paneth cells are present, and function of Paneth cell is to secrete dipeptidase. Another name is peptidase, and third and last is also called a erapsin. Is it clear, Bacha Badi? Any doubts? Okay. Now it is called a protein digestion. यहाँ पे इतना समझ लिया, it's not completed.
हमें और चीज यहाँ पे लर्न करनी होगी। लाइक और कौन सी चीज यहाँ पे हमें लर्न करनी है, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछे आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन हो, आपको आंसर देना है, मैं ऑप्शन दूंगा आपको, अमाइनो एसिड, डाइपेप्टिड, डाइपेप्टाइड, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड। क्वेश्चन इज amino acid is first option, second option dipeptide, third option small polypeptide. And question is, if in any person trypsin is inactive, trypsin is inactive, now what will be the product? Trypsin is inactive, then what will be the product? तो कई सारे बच्चे, मोस्टली कई सारे यानी 90% स्टूडेंट क्या सोचेंगे, ट्रिप्सिन इज इनएक्टिव, सो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड यहां नहीं बनेगा, ट्रिप्सिन इज इनएक्टिव, सो डाइपेप्टाइड नहीं बनेगा, बट अमाइनो एसिड तो बनेगा। बोलो अमाइनो एसिड आएगा आंसर? नो। व्हाई? रिसेंट बिफोर टुडे आई इन अ टेस्ट आई आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस कि भाई आप यहां से शहरा तक नहीं पहुंचोगे तो लोनावाला तक पहुंचोगे? डेफिनेटली। समझे? तो इसी तरह यहाँ पे ट्रिप्सिन इनएक्टिव हो तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड डेफिनेटली नहीं बनेगा, डाइपेप्टाइड विल आल्सो नॉट सिंथेसाइज्ड, बट will amino acid synthesize? Answer is no, because when dipeptide is not synthesized, then how dipeptide will convert it into amino acid? So product is none. ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं और ये भी नहीं। सो एक एक मैंने डेमो क्वेश्चन दे दिया, उसके बेस से आपको क्वेश्चन बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दे रहा हूं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस एंड इरेप्सिन। आपको कोई क्वेश्चन पूछे, सिलेक्ट दी ऑड वन, सिलेक्ट दी ऑड वन, तो आंसर क्या आएगा? आप सोचते रहोगे यार क्या आएगा, चारों प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, चारों का काम है ओके कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, तो आंसर क्या आएगा? यस, एक सेकंड में लाइट होना चाहिए, आंसर इज इरेप्सिन। वेरी गुड। हाउ आंसर इज इरेप्सिन? बिकॉज trypsinogen is we are going to make active. Chymotrypsinogen we will also make it active. Procarboxypeptidase we will also make it active. But erapsin is already active बच्चा पार्टी। Is it clear? So ये था हमारा प्रोटीन डाइजेशन। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से कल टेस्ट में आए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कल, बराबर सही होना चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज आप सबके लिए प्लीज ये फोकस कर लेना। शायद किसी को लिंक ना मिली हो तो भाई आंसर रिप्लाई करते रहना। भाई ओके है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल रिप्लाई करो। ओके, ओके फाइन, ओके वेरी गुड, चलो गुड 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 गुड, बस रिप्लाई करते रहना अभिषेक, प्रीतम, चलो डन। नाउ आदित्य, इज इट क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट digestion of polysaccharide. There are remaining three type of digestion. First we will learn that carbohydrate 30 percentage 30 percentage carbohydrate digested digestion start in buccal cavity, 30 percentage starch and 70 percentage starch, 70 percentage starch, 30 percentage starch, first of all in buccal cavity. This starch will digested into starch. What is starch? Do you know? Carbohydrates, very good. Polysaccharide. First of all, what is starch? It is polysaccharide. Now, you know in which food particle starch is present. So, starch is present in many food, but one example is rice.
You are eating very tasteful Chinese rice. Just feel it. Yes, you have to feel this subject because biology is about respiratory system. You have to deep breathe. The biology subject is about respiratory system. You have to feel that oxygen is binding with RBC and RBC is, yes, giving oxygen to our brain and we are getting energy. Yes, we are energized by oxygen. We have to feel. We have to study about excretory system. Okay, now this is subject of feel. So digestion feel करो कि भाई Chinese rice अभी just you have to eat in carbohydrates, polysaccharide. Now this starch will converted into maltose, and this maltose is disaccharide. This maltose is disaccharide. याद रखो starch is polysaccharide and maltose is disaccharide. Can we say that it is complete digestion? No. Yes, very good. ये complete digestion नहीं बोलेंगे because you know that starch is polysaccharide and it is made up of glucose. When each and every glucose will separated from starch, then we will say that it is complete digestion. But in a presence of which enzyme? In a presence of which enzyme this starch is going to break down into maltose. So remember one thing that starch is digested in a presence of salivary juice enzyme called amylase. Amylase is present in salivary juice from which is secreted from salivary gland. Which juice? Salivary juice. And this is amylase from salivary juice, and this amylase is also called ptyalin. याद रखो amylase is also called ptyalin. Please याद रखो because in next short note we will study about again amylase, but this amylase which is secreted from pancreas, we cannot say that it is ptyalin. Okay, so please clear cut रखो दिमाग में कि भाई amylase which is secreted from salivary juice, this amylase we can say that it is ptyalin, not pancreatic amylase, we can say ptyalin. Okay, so second function of salivary juice. Salivary juice is saliva gland is secreting lysozyme. Lysozyme is antibacterial. Antibacterial. Lysozyme will kill bacteria. Okay, so this is the function of salivary juice, lysozyme and amylase. Now this maltose from buccal cavity, feel, just feel. This maltose is going to come in pharynx, esophagus and will enter into stomach. But in stomach, just protein digestion will occur. In stomach, carbohydrate digestion will not occur. So maltose will continue in duodenum. Now, it will not digested into stomach, but this maltose will digested into duodenum, small intestine. तो जस्ट यहाँ पे मैं उस तरह से ड्रॉ करूंगा कि जिससे आपको पता चले भाई ये डिओडेनम है. दिस maltose, this maltose will break down into glucose plus glucose. Now it is called a complete digestion. Yes, we can say that now 30 percentage starch is complete digestion. But how? This maltose is breakdown in a presence of maltase. In a presence of maltase. So this maltase, from where it is secreted? It is
small intestines, first part called a duodenum. And this duodenum's innermost layer is called a mucosa. It is called a mucosa layer. Mucosa layer contain Paneth cell. Just in protein digestion, we study that Paneth cell will secrete some enzyme like maltase. So this maltase will digest maltose into glucose plus glucose. So starch is polysaccharide, will convert into disaccharide. This disaccharide will enter into pharynx, esophagus, stomach, will not digested into stomach, but this maltose will again digested into small intestine in duodenum. Is it clear बच्चा पार्टी? Okay, good. अगर आपको रिवाइज करना है तो मैं यहाँ रिवाइज नहीं करवाऊंगा, बैक जाओ और वीडियो को 1.25 या 1.5 स्पीड पे एक बार रिपीट कर लो. So maltose converted into glucose plus glucose. So it is called a complete digestion of 30% starch. Now we will learn digestion of 70% starch. So 70% starch digestion will start in duodenum and which complete into duodenum. How? So this starch 70% starch, that means polysaccharide. This polysaccharide will convert this polysaccharide, just we have to use eraser. This polysaccharide is going to convert into disaccharide, and there are three examples of disaccharide. It is polysaccharide and will digested will break down into disaccharide. So three example of disaccharide. First is maltose, याद रखो. Second is sucrose and third is galactose. I will write here maltose, sucrose and galactose or lactose. ऑनलाइन जो आज प्रेजेंट है, यस, तुरंत आपको पता चलना चाहिए सर lactose, because just before today I told you that lactose is milk sugar. Yes, याद आया कुछ? Okay, so this is maltose, sucrose and lactose. These are disaccharide. How this starch will digested into this disaccharide amylase. How this amylase? From where? Which gland? This amylase will secreted. So the answer is pancreas. Pancreatic amylase. And it is not called a ptyalin. Salivary amylase, we can say that it is ptyalin. But pancreatic amylase, we cannot say it is ptyalin. Can we say that it is complete digestion? No, it is not complete digestion. याद रखो, this maltose will break down into glucose plus glucose, monosaccharide plus monosaccharide. Yes, this maltose will converted by maltase. ये माल्टेज कहां से सिक्रीट हुआ? आई फॉर intestinal juice. Again, this is mucosa layer. This is Paneth cell, and Paneth cell will secrete maltase. Again, second step, sucrose will digested into glucose plus fructose, fruit sugar called fructose. This is sucrase. Again, it is secreted from intestinal juice, from Paneth cell. Last and final, lactose. This is also disaccharide. This lactose
will convert it into mono plus mono, but glucose plus galactose. Is it clear? So glucose and galactose, these both are monosaccharide in a presence of lactase. So this is again intestinal juice. It is also secreted from pan itself. So remember one thing, that maltase, sucrase and lactase, these three intestinal juice are secreted from mucosa layer and from pan itself. So we can say that it is complete digestion. Is it clear? So protein digestion और यहाँ पे कौन सा देखा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ये क्लियर रखो। प्रोटीन डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन दोनों की कंपेयर करके यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, याद करो ऑप्शन, क्योंकि यहाँ एमसीक्यूज मेन है। एमसीक्यू आपने थियरी आप लिख पाओगे, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो हमारा काम आपका काम हो जाएगा। सो जस्ट check it. I am giving some question. We will use yellow. First option A, B, C and D. First option amylase. Second option trypsinogen. Third option erepsin. Fourth option trypsin. Select the odd one. Select the odd one out of 4 option. तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? यस, जो भी अभी लाइव है आंसर दो। सिलेक्ट दी ऑड वन, प्रॉपर हिंट हर टाइम आपको नहीं देंगे, प्लीज ट्राई करो। सिलेक्ट दी ऑड वन, ये 4 ऑप्शन है उसके अंदर से। यस, अभी ओके, अभी का आंसर आ गया, देखते हैं सही है गलत है। चलो कम ऑन बच्चा पार्टी, कम ऑन। यस, आयशा शर्मा जी आंसर आ गया। यस, शर्मा जी, हीना, yes, Damur, yes, come on, you can win a mega prize. Yes, come on fast. The answer is amylase, because these three are useful in digestion of protein, but this amylase is useful to digest carbohydrate. कई बार ऐसे ऑप्शन होंगे कि आपको होगा ये क्या है, ट्रिप्सिनोजन में से ट्रिप्सिन बना था। यस, बट दिस थ्री you have to compare that these three last three are useful for protein digestion. समझे? ओके, नाउ फर्स्ट इज amylase. क्लियर हुआ शर्मा, आयशा? बाकी के ज्वाइन नहीं हुए, आई थिंक युगवी आज एब्सेंट थी है ना, कल टेस्ट है भाई, ज्वाइन हो तो संभलना, कल प्रिपेयर करके आना है। ओके, कल हेल्थी कंपटीशन होगी, 100 आउट ऑफ 100 थे। ओके, आयशा शर्मा, देन यस, जितने भी युगवी आप 100 आउट ऑफ 100, देन 96, 92, 90, ये 5 के बिटवीन कल काफी हेल्दी कंपटीशन होने वाली है। देखते हैं हम। ओके, देखते हैं किस में कितना है दम। देखे जरा किस में कितना है दम, देखते हैं बच्चा पार्टी कल किस में कितना है दम। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टडी डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपको बताए थोड़ा बैकग्राउंड में यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा। आई थिंक यस, वाइट बैकग्राउंड, it will be good for us. Now यहां पे देख लो कि डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है न्यूक्लिक एसिड या कोई भी हो, हम प्रॉपर डाइजेशन स्टार्टिंग से एक बार स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक से जाते हैं कि भाई हाउ न्यूक्लिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड, उसको पहले समझना जरूरी है कि भाई ये न्यूक्लिक एसिड कहां से सिंथेसिस हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you know that we study about, जो न्यू स्टूडेंट है आप फोकस करना, इट इज पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4 and fifth carbon. First carbon will join to nitrogen base, and this nitrogen base, and it is called a pentose sugar. In a presence of this is called a glycosidic bond. Glycosidic bond. And this too is called a nucleoside. Nucleoside. How many side we have? Yes. पोज नहीं देना है भाई. Yes. यहाँ पे दो साइड है, वैसे न्यूक्लियोसाइड. फिफ्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है. फिफ्थ कार्बन इज जॉइन टू phosphate S3PO4 minus. So this is called a nucleotide. Yes. What is this? Nucleotide. टाइड के ऊपर से याद रखो थ्री component. Tide is made up of three component. Side is made up of two component. And this is called a ester bond, or due to phosphate we can say that it is phosphoester. Within 1 minute we will study about phosphodiester. Phosphodiester, but it is phosphoester. It is not phosphodiester. It is called a phosphoester. So न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, क्वेश्चन पूछे तो न्यूक्लियोसाइड में ग्लाइकोसिडिक, न्यूक्लियोटाइड बनने में यहाँ पे फॉस्फोइस्टर या फिर ईस्टर बॉन्ड. इज इट क्लियर? सो इट इज वन न्यूक्लियोटाइड. अगेन यहाँ पे याद रखो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड. More nucleotide will linked and it will make nucleic acid. So यहाँ पे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं another nucleotide. It is called a phosphate. हम शॉर्टकट में phosphate लिख सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 carbon. It is called a nitrogen base. It is glycosidic bond. It is ester bond. Now two nucleotide will join by which bond? It is called a phosphodiester bond. It is called a phosphodiester bond. Please mind it. इसको भूलना नहीं है. Please again repeat करो. Two nucleotide will join by which bond? फॉस्फोडाइस्टर. सो एक न्यूक्लियोटाइड में कौन से बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक, देन ईस्टर या फिर फॉस्फोईस्टर. बट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन इज linked by phosphodiester. So it is called a phosphodiester. Is it clear बच्चा पार्टी? So याद रखो न्यूक्लिक एसिड ये बन गया हमारा न्यूक्लिक एसिड. ये ऐसे सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे होगा तो इसको हम आरएनए बोलेंगे. और यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड हो एक न्यूक्लियोटाइड सेकंड थर्ड फोर फाइव इसको आरएनए बोलेंगे. और इफ टू स्ट्रैंड present it is called a DNA. Nucleotide, 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 nucleotide. So it is called a polynucleotide. It is called a polynucleotide. But single strand called RNA and double strand called a DNA. ये RNA DNA एक 2 मिनट का नहीं है. हाँ? Yes, it will. I have to give at least 8 hours for DNA RNA concept. बट जस्ट मैंने 8 सेकंड में एक ही पॉइंट बोला है कि भाई डीएनए इज टू स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, टू चेन स्ट्रक्चर, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, बट it is called a nucleic acid. So now we have to study that how nucleic acid will digested. So now make in mind that nucleic acid will not digested into buccal cavity, will not digested into stomach,
but digested into small intestine. Okay, clear? And in small intestine in duodenum. So we will draw it is duodenum. It is pancreas. Now nucleic acid. Nucleic acid. याद रखो. This nucleic acid is digested into nucleotide. Will digested into nucleotide. Mind it. So nucleic acid will digested into nucleotide in a presence of nuclease. Nuclease is constituent of pancreatic juice. So nuclease यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक स्मार्ट क्वेश्चन. ऑप्शन यहाँ मैं लिख रहा हूँ ईस्टर बॉन्ड. प्लीज नीट में 1 2 3 ऑप्शन देंगे. सेकंड ऑप्शन ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक. थर्ड ऑप्शन फॉस्फो, फॉस्फोडाई ईस्टर. तीन ऑप्शन है, आंसर दो. न्यूक्लियस विल ब्रेक विच बॉन्ड. चलो कम ऑन क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट फटाफट फटाफट. मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में किसका आंसर आ चुका है. कम ऑन, यू कैन गिव आंसर. यस फास्ट. यस यस यस. वेरी गुड वेरी गुड. ऋतु सुपर. यस वेरी गुड फाइन. ओके माइंड ब्लोइंग गुड. चलो आंसर यहाँ पे क्या आएगा. यस फॉस्फोडाइस्टर. व्हाई फॉस्फोडाइस्टर? बिकॉज यू नो it is nucleotide, 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 and it is called a nucleic acid. Now nucleic acid we have to break down. So two nucleotide are joined with phosphodiester bond. Just I am using another different color. Okay, we will use red color. So it is called a phosphodiester bond. This in red color, it is called a phosphodiester bond. So two nucleotide will join with phosphodiester bond. So nuclease will cleave phosphodiester. So each and every nucleotide will break down. So nucleic acid, it may be RNA, it may be DNA, will digested into nucleotide. Is it clear? Now, this nucleotide, this nucleotide, tide for you know that three component nucleotide will digested into 2 plus 1. What is the meaning of 2 plus 1? I have to use proper eraser. What is the meaning of 2 plus 1? You can understand that 2 plus 1. That means nucleoside plus P for phosphate. So nucleotide will digested into nucleoside plus phosphate. Is it clear बच्चा पार्टी? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? तो याद करो और याद रखो न्यूक्लियो, न्यूक्लियो. टाइड को तोड़ने के लिए टाइडेज, टाइड को तोड़ने के लिए टाइडेज. याद रखो अगेन टाइड को तोड़ने के लिए टाइडेज. So nucleotide will break down into nucleoside plus phosphate in a presence of nucleotides. कहां से सीक्रेट होगा? अगेन सेम, ये इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड अ म्यूकोसा. म्यूकोसा सेल यहाँ पे पैनेथ सेल हो गए म्यूकोसा लेयर में, एंड दिस पैनेथ सेल विल सीक्रेट nucleotides. So it is intestinal juice. Can we say that it is complete digestion?
No, it is nucleoside. We cannot say that it is complete digestion. This is nucleoside. We have to break down this nucleoside. Nucleoside. That means two component. Nucleoside will digest it into 1 plus 1. I will use again eraser. 1 plus 1. What is the meaning of 1 plus 1? ન્યુક્લિયોસાઇડ. હલો, હું લેક્ચરમાં છું લાઈવ. બોલો. હા બકાસ, હા હું કરી દઈશ. હા લોક, હા ચાલ, ઓકે ઓકે. ન્યુક્લિયોસાઇડ will convert into pentose sugar. Nucleoside is converted into 1 plus 1. It will convert it into pentose sugar. Pentose sugar plus nitrogen base. Pentose sugar plus nitrogen base. शॉर्टकट में लिख रहा हूं, याद रखो. Nitrogen base. That means 1 plus 1. So, in a presence of nucleosidase, याद रखो nucleosidase. Again, Paneth cell will secrete this nucleoside. So, it is from intestinal juice. Nucleotidase is also secreted from intestinal juice. So, it is called a complete digestion of nucleic acid. Is it clear, बच्चा पार्टी? Done. Good. चलो, any doubts? भाई रिप्लाई कर दो फटाफट से. Fast, fast, please reply. Any doubts? Clear? Okay, done. Very good. Chalo, fine. Now, we will complete next lipid digestion. Now, what is lipid digestion? Lipid digestion क्या है? तो उसके बारे में लर्न करने से पहले हमें लिपिड को समझना होगा. बच्चे मार्क्स ले आते हैं, एमबीबीएस में क्वालिफाई हो जाते हैं, बट लिपिड क्या है उनको नहीं पता होता है कई बार, तो इट्स नॉट गुड. सो स्टार्ट करें हम. वी विल चेंज द बैकग्राउंड. यस, background we have to use blue, no, black, yes, it's perfect, I think. Yes, purely black. Yes, good. Now, nucleic acid. Now, lipid digestion. How lipid is formed? First of all, lipid is formed. What is lipid? So, lipid is made up of glycerol plus fatty acid. Glycerol plus fatty acid. Remember one thing. Likewise, just we studied before 2 minutes that if we have to understand nucleic acid digestion, we have to understand that how nucleic acid synthesized. So, as same as in this case, if we want to understand lipid digestion, first of all, we have to make clear that how this lipid is formed. And as per college knowledge, as per Google knowledge, lipid is very complex molecule. And but we will study in short, very short, because in ninth chapter already you are going to study about lipid. But for digestion of lipid as per 16 chapter, you have to focus little on lipid, that how lipid is formed. So first of all, how lipid is formed. So in shortcut, we will say that G plus F. G for glycerol, F for fatty acid. Now glycerol, what is glycerol? You know that glycerol is made up of 3 carbon. Glycerol, glycerol, all for OH. Glycerol have OH group. And for carbon have 4 valency, you know that. So we have to complete 4 valency, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. But if we will write that it is CH2,
that it is okay. But we have to rough this hydrogen. Okay, clear? As same as in this. Now we will write down CH2. So CH2OH, CHOH and CH2OH. It is called a glycerol. How many OH group are present in glycerol? So you can see that there are 3 OH group are present in glycerol. So मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक साइड है, उसके साइड में एक साइड में 30 kg और एक साइड में 10 kg. Will it make balance? No. Another molecule of 10 kg, will it make balance? No. Another molecule of 10 kg, yes. So in this case glycerol is only single molecule which contain 3 OH group. But in fatty acid, single fatty acid have COOH, so it is single fatty acid carboxyl group. Will it make balance? No. We required another fatty acid COOH. Will it make balance? No. But we required final fatty acid COOH. So it will make balance. That means one glycerol and 3 fatty acid. One glycerol plus 3 fatty acid will make balance and will join by ester bond by removing H2O molecule. H from glycerol, H2 is removed. H from glycerol and OH from fatty acid. H from glycerol and OH from fatty acid. Is it clear? H from glycerol and OH from fatty acid. So what will made? यहाँ पे कितने molecule remove हुए? 3. Yes, 3 molecule of water will removed, and remaining portion we have to write down that we will use another pen. We will use, let's use parrot color. C, one carbon, third carbon. Clear दिखाई दे रहा है? Okay, good. So CH2, CH, CH2O, O, because H is removed. Again, OC, R1, OC, R1, OC, R2, OC, R3. It is called a triglyceride and it is one of the example of simple fatty acid triglyceride. याद रखो please. It is called a triglyceride. So this is triglyceride and how many ester bond? This is ester bond. This is ester bond because glycerol and fatty acid, glycerol and fatty acid will linked with each other by removing 3 water molecule by ester bond. And एक क्वेश्चन आपको होगा भाई व्हाट इज R1? आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई व्हाट इज R1, तो आपको जो भी डाउट्स है ऑन द स्पॉट पूछ लेना है. R1, R2, R3 है क्या? इट इज हाइड्रोकार्बन चेन. इट इज हाइड्रोकार्बन चेन. नाउ व्हाट इज हाइड्रोकार्बन चेन? सो फर्स्ट याद रखो, आई विल यूज प्रॉपर पेन. सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई एक फैटी एसिड है कि जिसके अंदर COOH है. अब यहाँ पे 4 कार्बन है. यस, ऐसे 4 कार्बन है. सो यहाँ पे क्या होगा? CH2, अगेन CH2 और लास्ट में क्या होगा? CH3. सो ये क्या हो गया? यस, ब्यूट्रिक एसिड. ये क्या हो गया? ब्यूट्रिक एसिड. सो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड. सो फैटी एसिड क्या है? R1, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन. हम इसको क्या बोलेंगे? R1. R1 फॉर हाइड्रोकार्बन चेन. इज इट क्लियर? सो R1 क्या है वो आपको समझ में आएगा. ये R1 में कितने कार्बन हुए? 1, 2, 3.
वैसे अगर पामिटिक एसिड हो, राइट, स्टीरिक एसिड हो, तो उसमें अलग अलग कार्बन के अमाउंट होते हैं। या याद रखो कि सपोज 18 कार्बन है, टोटल 18 कार्बन का फैटी एसिड है, तो उसमें 18 कार्बन में से याद रखो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इज 18 इन फैटी एसिड, then amount of CH2 amount of CH2 will be what? तो आंसर क्या आएगा कि भाई कोई भी 18 कार्बन का फैटी एसिड है, उसमें लास्ट में क्या होगा, COOH होगा, और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, CH3 होगा, राइट। तो उसके बिटवीन जितने भी कार्बन है उसके अंदर क्या होगा, CH2 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 CH2, तो कितने बाकी कितने बचे, 18 -1 तो आंसर आएगा 16। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूं, इसको हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर नंबर 9। ये जस्ट आई एम टेलिंग यू 2% ऑफ फैटी एसिड, इंपॉर्टेंट ऑफ फैटी एसिड समझो। उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, समझे, वो आएगा। इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इन सैचुरेटेड फैटी एसिड देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड is present, but in unsaturated fatty acid there are two double bond are present. So there are many type of fatty acid, like saturated fatty acid, unsaturated fatty acid, but in this case, we have to focus that what is lipid? Lipid is made up of glycerol and fatty acid. Which bond is present between G plus F? Then bond is ester bond. याद रखो, CH2 CHOH, याद रखो, यहाँ थोड़ा इसका यूज करूंगा। Yes. CH2OH, CHOH, CH2OH. Okay. Now COOH R1, COOH R2. If three out of three fatty acid are same, then we will write R1, R1, R1. But one is butyric acid, another is मैंने example दिया था palmitic acid, another is stearic acid, then we will say R1 is different than R2 and R2 is different than R3. So removal of, यहां से OH को मत निकाल देना, यहां से OH निकालना है और यहां से H, यहां से H, यहां से OH। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, ईस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर? भाई जाग रहे हो ना, है ना, श्योर? ओके, बस चाय भाई आ गई, हाँ चाय मिल जाएगी। ओके, पेरेंट्स को ऑर्डर कर दो, चाय पानी रेडी कर दो। वैकेशन क्या चीज है, वैकेशन में क्या करोगे, अभी घूमोगे फिरोगे नाचोगे गाएंगे गाओगे ऐसे करोगे और क्या, समझे। बट थोड़ा स्टडी भी कर लेना है मॉर्निंग में, 9 to 12 आपने प्रॉपर लेक्चर्स अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद रेगुलरली 1 घंटा आपको स्टडी करना है। बोलो, रिप्लाई करो, यस और नो, यस और नो, प्लीज रिप्लाई मी, यस और नो। रेगुलरली आप रेडी हो रोज 1 घंटा स्टडी करने के लिए, सीरियसली? यस, वेरी गुड। ओके, someone is telling no. Okay, yes, yes, no, no, just joking. Yeah, are you ready? So it is called a lipid, glycerol and fatty acid, but it's not our topic. Our topic is to digest lipid. It is synthesis of lipid, okay, and our topic is digestion of lipid. So मैंने पहले ही बोला ना कि भाई कैसे तोड़े, यानी कैसे डाइजेशन करे, उसके पहले हमें कैसे जनरेट करना है, कैसे सिंथेसाइज करना है, ये जानना जरूरी है। ओके, और जो भी यहाँ पे मेरे जैसे फैटी लोग बैठे हैं उनके लिए मैं बोल देना चाह रहा हूँ कि जो भी ज्यादा शुगर खा रहा है, समझे, जो भी ज्यादा डेयरी मिल्क खा रहा है, जो भी ज्यादा कैलोरी लेगा, दिस all calories are going to converted into lipid. Yes, जो भी आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे ना या फिर डाइटिशियन के पास जाओगे तो पहले क्या बोलेगा पता है, चाय पियो कॉफी पियो, इट्स ओके, बट प्लीज डोंट ईट each and every particle of
sugar. Don't eat, please. Never and ever you have to take food related with sugar. Really, sugar बंद करो, लिपिड बंद हो जाएगा, लिपिड बंद होगा तो सिंथेसिस नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगा तो डाइजेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। चलो स्टार्ट करो, डाइजेशन कैसे पढ़े। चलो नेक्स्ट, first of all, lipid digestion is very interesting, really it is very interesting. So we will draw, it is liver, it is liver, it is stomach. Now, lipid digestion will occur in stomach? No. Will occur in buccal cavity? No. Lipid digestion will start into duodenum. I will rub some extra thing in this whiteboard. Lipid digestion will start in duodenum, U-shaped duodenum. समझ लो यहाँ पे पूरा हमें बोर्ड कवर करना पड़ेगा ये डिओडेनम को समझने के लिए, लिपिड डाइजेशन को समझने के लिए यहाँ रफ करना पड़ेगा। चलो यस, नाउ इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, माइंड इट, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वी हैव टू make concept of lipid digestion very clear. So lipid digestion, first of all, lipid is made up of macromolecule, macromolecule which cannot be digested. पहले डाइजेशन के लिए उसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्शन करने के लिए हमें उसका इमल्सिफिकेशन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल emulsification, 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 it is first step of lipid digestion. So first a lipid will convert it into small molecule and small molecule are called emulsified lipid. Is there any enzyme which is useful in this reaction? So answer is no. Yes, मैंने बोला था वन ऑफ द टॉप 5 सेंटेंस जो ये चैप्टर के उसमें से ये है कि भाई यहाँ लिपिड डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप जिसमें इमल्सिफाइड लिपिड जो बना, इमल्सिफिकेशन हुआ, दिस इज वन एंड ओनली स्टेप in which enzyme is not used. Then what is used? You know that lipid, liver is synthesizing bile juice which is in green color. It will stored in gallbladder. It will stored in gallbladder. Mind it, gallbladder में ये bile juice store हुआ. Bile juice will secrete, bile juice will secrete in duodenum, and in bile juice there are some pigment bile pigment which are called bilirubin and biliverdin, जो आपका यूरिन कलर है, स्टूल कलर है, अनडाइजेस्टिव पार्टिकल, स्टूल कलर, यूरिन कलर, रिस्पॉन्सिबल इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। समझे? सो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन इज component of bile pigments. Even in bile juice, some bile salts are also used. We will study extra that what is bile salt. But first of all, lipid, we have to emulsified lipid. So now this emulsified lipid is digestible. So emulsified lipid is converted into di and monoglyceride. Now what is di and monoglyceride? What is di and monoglyceride? मैं आपको समझा रहा हूं, वेट एंड वॉच। यहां मैंने अभी चलाया था लिपिड डाई ग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड। नाउ व्हाट इज डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड? तो याद रखो, डायग्राम में देखो, मैं जस्ट मूव कर रहा हूं,
यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डाई एंड मोनोग्लिसराइड क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड है कि नहीं बच्चा पार्टी? ये ट्राइग्लिसराइड है, उसमें से ये दो कार्बन डाइग्लिसराइड एंड सेकंड वन इज मोनोग्लिसराइड. सो डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड, G+F क्या बना? डाई प्लस मोनो, डाई प्लस मोनो क्या बना? ट्राइग्लिसराइड. अब उसका उल्टा देखना है कि यहाँ लिपिड का क्या हुआ? लिपिड का डाइजेशन हुआ, इमल्सिफिकेशन हुआ, इमल्सिफिकेशन के बाद इमल्सिफाइड लिपिड जो है वो हम बोलेंगे डाइजेस्टेबल लिपिड. सो फर्स्ट इमल्सिफाइड लिपिड इज कन्वर्टेड इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड. किसके प्रेजेंट में हुआ? यहाँ पैनक्रियाटिक जूस में से जो एंजाइम निकला उसको हम बोलेंगे लाइपेज. एंजाइम इज लाइपेज, पैनक्रियाटिक. कैन वी से दैट इट इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ लिपिड? नो. यस, यहाँ पे डाई एंड मोनोग्लिसराइड इज नॉट simplest molecule of lipid. Now these di plus monoglyceride will converted into G plus F. G for glycerol, F for fatty acid. Is it clear? And अगेन एंजाइम इज लाइपेज. कौन सा एंजाइम कहां से आया? इंटेस्टिनल जूस. इंटेस्टिनल जूस आए तो आपको समझना है कि भाई यहाँ म्यूकोसा ग्लैंड के अंदर कौन से सेल थे? पैनेट. आप एक चीज याद करो, आपने एक चीज देखी कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा प्रोटीन डाइजेशन का लास्ट स्टेप क्या था? dipeptide to amino acid in a presence of intestinal juice, intestinal enzyme peptidase. 30% का अब रिमाइंडर रिमाइंडर करो, मेमोराइज करो. 30% माल्टोज डाइजेशन होने के बाद क्या बना था? याद करो, माल्टोज में से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इन अ प्रेजेंस ऑफ माल्टेज इज component of intestinal juice. Is it clear? Again, 70% maltose to glucose in a presence of intestinal maltase, intestinal sucrase, intestinal lactase. Lipid by digestion, it is also in a presence of intestinal lipase. Nucleic acid, nucleic acid is divided into three steps. First, nucleus, which was secreted from pancreas. But second and third, nucleoside is digested by intestinal juice, secreted from intestinal juice. Pannate cell, nucleoside is both from pannate cell. So it is called a न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन. जस्ट 2 मिनट यू हैव टू फोकस. अब एक स्मार्ट एमसीक्यू मैं देना चाह रहा हूं, बोलो आर यू रेडी? यस और नो? मूड है? यस और नो? आप बोलोगे तो कंटिन्यू. जस्ट 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट. आई विल गिव सम इंटरेस्टिंग एमसीक्यू. जस्ट 2 MCQ. आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? यस और नो बच्चा पार्टी? कम ऑन प्लीज फास्ट रिप्लाई मी. जस्ट 1 MCQ. उसके बाद वी आर गोइंग टू पैक अप. ओके फाइन. यस, चलो नो प्रॉब्लम. यस वेरी गुड. नाउ देखना है आपको, समझना है बच्चे यहाँ क्या हो रहा है. प्लीज फोकस करना. देखो क्वेश्चन, ऑप्शन ए you will use parrot color. Option A, option B, option C, option D. Nuclease, then trypsinogen, then amylase of 70% starch digestion,
एंड लास्ट lipase which will make glycerol plus fatty acid. चलो सिलेक्ट द ऑड वन, आंसर क्या आएगा? सिलेक्ट द ऑड वन, आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी। आराम से मैं देख रहा हूं किसका आंसर आ रहा है, प्लीज बी केयरफुल, आराम से आंसर दो, सही होना चाहिए। ए बी सी और डी, सिलेक्ट द ऑड वन, वो आपको सोचना है। सिलेक्ट द ऑड वन, सिलेक्ट द ऑड वन, आपको समझना है, आपको सोचना है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, कहां से कौन सीक्रेट हुआ? यस 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 हनी सिंह, यस बिल्कुल आयशा, यस सुपर डुपर हिट, माइंड ब्लोइंग, सुपर। नेक्स्ट, यस वेरी गुड। देखो जिसने आंसर दिया है दिल्ली, उसका आंसर बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों डी आएगा? क्यों डी आएगा आप समझो। न्यूक्लियस इज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिनोजन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। हनी सिंह वेरी ग्रेट है, मेरू भाई को मुझे बोलना पड़ेगा। मिथ से डबल स्पीड है भाई, से डबल स्पीड है तेरी। चलो, पैनक्रियाटिक जूस अमाइलेज ऑफ 70, बट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, लाइपेज विच विल मेक ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं? इंटेस्टिनल जूस की। बोलो समझे? तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछे तो सही होना चाहिए। क्लियर? ओके, चलो इतना करते हैं, अगला कल मिलेंगे। कल का टाइम मैं मैसेज कर दूंगा। ओके, आज हमने कवर कर लिया। ओके, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री कृष्ण, बाय।